होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो अप टिल नाउ। आई थॉट ये हेयर स्टाइल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मैं अपने बालों का एक सेक्शन लूँगी और उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगी। लेट्स से लेफ़्ट सेक्शन एंड राइट सेक्शन। लेफ़्ट सेक्शन से मैं एक हेयर स्ट्रैंड लेके उसको राइट सेक्शन के साथ मर्ज कर दूँगी। फिर राइट सेक्शन से हेयर स्ट्रैंड लेके मैं लेफ़्ट सेक्शन के साथ मर्ज कर दूँगी। एंड अगेन लेफ़्ट सेक्शन से हेयर स्ट्रैंड लेके मैं राइट सेक्शन के साथ मर्ज कर दूँगी और राइट सेक्शन से हेयर स्ट्रैंड लेके मैं लेफ़्ट सेक्शन के साथ मर्ज कर दूँगी। एंड आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम टिल द एंड ऑफ माई हेयर। ये बेसिकली एक फ़िश टेल ब्रेड है और ये बहुत बेसिक तरीका है फ़िश टेल ब्रेड बनाने का। आप इसको किसी भी तरह बना सकते हैं, अपने पूरे बालों के साथ बना सकते हैं, फ्रंट हेड पे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं। एंड आई थॉट आई एक्सप्लेन इट टू यू ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए और आप ये सही तरह बना सकें। कुछ हेयर स्टाइल्स तो बहुत ईजी हैं, सो आई थॉट इट्स नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन दैम टू यू। लेकिन जब भी मुझे मुश्किल लगते हैं आई डेफिनेटली ट्राई कि आपको मैं सही तरह समझा सकूँ। एंड ऑल ऑफ दीज हेयर स्टाइल्स आर प्रीटी अमेजिंग। आप इनको शादियों पे बना सकते हैं। अभी ईद आने वाली है, इट्स लाइक इन 3 to 4 days, आप उसमें भी बना सकते हैं। यू कैन ट्राई दैम आउट ऑन पार्टीज एंड व्हाट नॉट। For this hairstyle, I'm going to take a section of my hair and I'm going to split it into 3 strands. I'm going to pass the right strand over the middle strand, then the left strand over the middle strand. Then I'm going to add hair to the right strand and I'm going to pass it over the middle strand. Now I'm not going to add any hair to the left strand, and just like that I'm going to pass it over the middle strand. Again, I'm going to add hair to the right strand. I'm going to pass it over the middle strand, and then I'm going to pass the left strand over the middle strand without adding any hair to it. I'm just going to repeat the same. Just remember, you have to add hair to the right strand and pass it over the middle. Do not add hair to the left strand and pass it over the middle. And just
continue that. Now for the last hairstyle, it's going to be a side French braid. Separate your hair, a section of your hair like I did, and start making a French braid. Take 3 strands and pass the right strand over the middle, then left strand over the middle, and then add hair to the lower strand and pass it over the middle, and then add hair to the upper strand and pass it over the middle. This is like the basic French braid that we do. The difference is that I'm going to do at the side of my head, and that's it. Just continue the same steps till the end of this hair section and complete rest of the braid like a normal 3-strand braid, and you'll be done with it. I really hope you liked the video and the hairstyles, and I hope you will try these hairstyles too. If you do try them, you can send a picture to me on my Instagram and I can share it with my audience, obviously only if you would like me to. And yes, advance Eid Mubarak to all of you. I hope you all have a great Eid. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.